हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस फ़िल्म जो एक तमिल फ़िल्म है जिसका नाम है पोर्थोलिल। एक्चुअली पोर्थोज़िल नहीं है, जो साई ने ही मुझे करेक्ट किया था। उसका नाम कलेक्ट बराबर नाम है पोर्थोलिल, व्हिच इज़ डायरेक्टेड बाय विघ्नेश राजा, व्हिच इज़ अ डेब्यूटेंट डायरेक्टर and which stars in a lead role Ashok Selvan and R. Sarath Kumar. And so yes, here we go. Like I just liked that film and I decided to discuss that film. बहुत अच्छा लगा था मुझे. Let's start with the one and only Sai Sankar. Like he is making his debut in my podcast debut. So like मैं खुद नहीं जानता था साई को, लेकिन like he is a mutual friend, लाइक ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड, और फिर जाके उसके थ्रू मिले, एज़ इन ध्रुव के थ्रू, और लाइक ऑल थैंक्स टू ध्रुव, वैसे हर बार मैं बोलता हूँ। सो येस, एंड द सेकंड गेस्ट इज़ सताक्षी, द ऑल टाइम लाइक साउथ इंडियन मूवी लवर। लाइक वो तो कभी भी His रेडी होती है camera कोई is a bit tilted at this moment. Okay, so yes, like let's start this. Like ये शुरू करते हैं पोर्थोलिल डिस्कशन. So yes, साई, आपने ये फिल्म कभी देखी पहले, सबसे पहली बार, और ये फिल्म आपको कैसा लगा था? जस्ट आप बता सकते हैं? I watched it on August 11th after its OTT release, and I liked it very much because after 5 years, I have seen a really good thriller coming from Tamil cinema. Before 5 years, there was a movie called Ratchasam, Okay, and it was a really good film. I'll rank it as one of the best thrillers ever made in Indian cinema. hmm. And after 5 years, I have seen some film which reached almost on par with Ratchasam. Okay. सो इस फिल्म में ऐसा क्या लाइक खास लगा आपको? जस्ट लाइक ये काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ आपको लगा, जस्ट आप उसके बारे में बता सकते हैं? Yes, but making Okay, the making is really good, and the writing is really good, and the okay, details are really well pitched to the audience, okay. and there is a lot of foreshadowing. ओके, सो आपने जो चीज़ मेंशन की, डिटेल्स और लाइक काफ़ी फोरशैडोइंग जो मेंशन की है, डेफिनेटली हम आगे बात करेंगे उसमें। लाइक आपने जस्ट काफ़ी एक अच्छा सा ब्रीफ जैसा दे दिया है इस फिल्म के बारे में। सो ये लेट्स लाइक शताक्षी, आपने कभी पहले ये फिल्म देखा, और जस्ट आपको कैसा लगा ये फिल्म देखते हुए? I watched it yesterday actually. One of my friends, he is from Chennai, so he watched it in theaters and he told this to me like 1.5 months back, and he said, "This is going to blow your mind. This is so good. I'm a thriller freak, so all my friends they keep on recommending me good thrillers whenever they come across one." So he recommended me. He said, "This is your type of movie. Just go and watch it in theaters." But I couldn't find it anywhere in Kolkata. So I just waited for its OTT release, and I watched it yesterday. And that's because of this podcast. I wanted to watch it this weekend, but I couldn't wait for that long because the podcast was today. And what a great thriller it is! Not only a thriller, it's a great movie. I'd say it's really good. ओके, मैंने एक्चुअली ये फ़िल्म साय आपके कहने पे ही देखा, जब लाइक मुझे ये पता भी नहीं था कि ये फ़िल्म एग्ज़िस्ट करता है, क्योंकि काफ़ी बोलते हैं ना कि अभी अभी जेलर करके फ़िल्म आई थी, तो काफ़ी लाइक वो मेनस्ट्रीम फ़िल्म है, लेकिन मुझे कोई एक इंडी जैसी स्मॉल बजट में भी ऐसे कुछ एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर से ऐसे कोई फ़िल्म आई, तो मुझे पता भी नहीं था कि कौन-सी आ रही है। लास्ट मैंने फ़िल्म अगर देखी हो फ्रॉम साउथ सिनेमा, व्हिच वाज़ आई थिंक सो विडुतलय, येस विडुतलय, और फिर उसके बाद आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है कौन-सी लेटेस्ट वाली मैं देखी। मैंने विडुतलय पार्ट 1 ही देखी थी। अ, उस और उसपे ही मैंने फिर वीडियो भी किया था इवेंचुअली। सो जस्ट वो मुझे इतना पसंद आया था मुझे। आई लाइक फिर जाके थोड़े महीने बाद मैंने ये भी देखा था अंधकारम जैसे। लेकिन फिर जाके आपने जैसे मुझे रिकमेंड किया कि ये देखो, ये काफ़ी अच्छा है। जैसे आपने बोला 11 अगस्त को आपने ये देखा, ओटीटी रिलीज़ के जस्ट तुरंत
लाइक रिलीज के जस्ट तुरंत बाद देखा। तो आप कैसे एकदम लाइक थ्रिलर फैन है? सो मैं भी लाइक ये थ्रिलर लाइक क्राइम ड्रामा का फैन हूँ, जैसे मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती है वैसे। और जब मैंने देखा सो मुझे थोड़ी-थोड़ी चीज़ें विडुथलई जैसी याद आई थी कि कैसे विडुथलई में लाइक मतलब एक वो एक नए पुलिस ऑफिसर की कहानी है, उसमें कैसे जैसे उनके स्ट्रगल्स दिखाए हैं कि स्टार्टिंग में जस्ट लाइक लोग कैसे जस्ट ब्यूरोक्रेसी में जैसे बिलीव करते थे, जस्ट हाँ वो काम होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे, लाइक एक्चुअल काम नहीं करने में ज़्यादा बिलीव रखते थे उसमें। सो वो सब चीज़ें विडुथले और इस चीज़ में भी काफ़ी सिमिलर थी, लेकिन ऑब्वियसली वो जो एंगल था लाइक बोलते कि जो इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर वो काफ़ी अलग था ऑब्वियसली। लेकिन हर हर मूवीज़ में देखते हैं कि जैसे शुरुआत में बता देते हैं कि क्या कैसा हो रहा है यहाँ पे। इस फ़िल्म में ओह वाओ! ग्रेट कैमियो। ओके। सो इस फ़िल्म में एक का लाइक इस फ़िल्म में ऐसा कुछ नहीं दिखाते हैं, लाइक इस फ़िल्म में स्टार्टिंग से हमें टेंशन बिल्ड करते ही है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, और फिर जाके कुछ दूसरा ही होता है वैसे। और एक 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 स्पेसिफिक सीन के बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में सही मिडल में एक सीन आता है कि वहाँ पे काफ़ी अच्छा टेंशन बिल्डिंग किया है कि मतलब एक एक सीन जैसे रहता है, हाँ करेक्ट, वहाँ पे जब ये वो थिएटर में फ़िल्म देखने जाता है और फिर जाके पुलिस वहाँ पे पूरा Yes, yes. वो पकड़ती है वैसे। और कैसे वो सीन को टेंशन बिल्ड किया है कि लाइक वो पूरा उसने बोला कि मैं ये फ़िल्म देखने जा रहा हूँ, और सॉरी मैं ये फ़िल्म देख के आया और ये सब किया, और पैरेलली ये सब मतलब उसके खुद के घर पे भी सब चीज़ें चल रही होती है और वैसे। सो लाइक काफ़ी I अच्छा was so टेंशन much बिल्डिंग into किया। that particular scene. The tension was built up so well that when the train passed, na, I almost had a mini heart attack. That was really एग्ज़ैक्ट very suspenseful. सच में यार मतलब एक बहुत ही अच्छा फ़िल्म है इन इन जनरल वैसे तो। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे। सो लेट्स गेट लाइक इन डिटेल इनटू इट्स। एक लाइक आपने जैसे पहले बोला था कि आपको ये चीज़ की डिटेलिंग और फ़ोरशैडोइंग वगैरह काफ़ी पसंद आई थी। जस्ट उसके बारे में और अच्छे से एलैबोरेटली बात कर सकते हैं उसमें कि क्या कैसा लगा था? Sure, bhai, sure. Right from the very beginning, when protagonist is introduced and his his nephew throws a phone at him And he instead catches of it. giving it, and he catches the phone. The same detail will be seen in the climax of the film. His reflexes. He has very great reflexes, and that's established in the very beginning, and it will be shown even at the end. It will be made use of at the end of the film. And similarly, when the SP Loganathan character explains the modus operandi to the subordinate or protagonist, ओके, ओके। there और will कोई be ऐसा a sort of हाँ, superiority while he's explaining to him. ओके, And he explains about the inferiority complex of the killer. Yeah. ओके, And how he And enjoys it's killing. like a superior explaining to his inferior, just like he exerts his authority over. And when the doctor who conducts post-mortem explains the formation of strangulation on front part of the neck, Hmm. we know that the suspect they find, like you mentioned in the previous scene, there's a suspect and they cross examine him using this movie ticket, हुँ, and they ask questions about the film, peculiar questions about the film. Only the audience who has watched the film can answer. Based on the way the autopsy or the forensic expert explains,
We know that the suspect isn't the killer, there is someone else, Hmm. because the strangulation mark here is present in the front of the neck, and there are And two also, timelines during which serial killings happen, and we get to know based on the way they are killed and based on the which side the strangulation is formed, the killers are different, Okay. and such details are planted everywhere. Okay. Even when they ask about the movie and he answers correctly, we know that he isn't the killer. Okay. Another murder takes place. Hmm. So by halfway through the film, we know that the suspect isn't the killer, but they sort of cover it up like a red herring, and they make him a potential suspect who killed it, killed the people. Okay. hmm, सताक्षी आप कुछ बोल रहे थे regarding, सॉरी oh, yeah, I was interrupting him. नो So नो sorry आप for that. अपना कुछ व्यूज बोल रहे थे जस्ट Hmm. About the murders. I was trying to say the doctor also said the murderer must be a very strong-willed man. So when I first saw Sharad Babu, that's his name, right? That veteran Yes, yes, actor who died few months back. Yeah. yes, दैट्स yes. So राइट It's his name. when I first saw him, the man probably has OCD. The way he was arranging everything and he was being very particular about cleaning stuff. So I thought, yeah, he's the old killer. I mean, that killer 25, 30 years back who was operating at that time. But the fresh murders, he's not associated with them. As the way the murders were conducted, I mean, pulling a girl's hair and then tying her hands behind her back with her hair, it needs a lot and lot of strength. And that man was very old and fragile, so he can't be the killer. So sure about that. ओके एक्चुअली मैं मुझे सच बोलूँ कि ये चीज़ मुझे नहीं पता चली थी लेकिन अ, मैं बोलता हूँ ना मैं जस्ट सरप्राइज़ होना चाहता हूँ ये चीज़ के बारे में तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था वैसे और हर जैसे इन्वेस्टिगेटिव कॉप क्राइम ड्रामा जैसे देखते हैं काफ़ी नई-नई चीज़ें पता चलती है इस फ़िल्म में भी ऐसी नई-नई चीज़ पता चली थी काफ़ी ट्विस्टेड अलग थी कि कैसे एक पुराना मर्डर्स लाइक जो थे सीरीज़ ऑफ मर्डर्स जो नए मर्डर्स को लिंक करता है वैसे और वो एक मुझे यूनिक चीज़ लगी थी इसलिए और वो इसलिए मुझे काफ़ी ये फ़िल्म काफ़ी पसंद आई थी कि Hmm. कैसे पुराने मर्डर्स थे और नॉट जस्ट लाइक वो मर्डर्स लाइक उसके जो मोटिव्स थे वो कैसे अलग थे कि उसको उसके पापा को मारना नहीं था और उसको पापा को मारने की हिम्मत भी नहीं थी। इसलिए उसके वजह से वो दूसरों को मार रहा था और फिर जाके एट द एंड मतलब उसको भी पछतावा हो रहा था। उसने ऐसा बोला भी कि एक दिन ऐसा नहीं गुज़रा कि मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे पछतावा हो रहा है, मुझे रिग्रेट हो रहा है, ऐसा और Sanket, और येस आप I कुछ have बोल a रहे थे? very bad habit of interrupting people while they're speaking. नो, नो, नो एब्सोल्यूटली नॉट आप बोलिए। Uh, a few days back, I completed a novel called Troubled Blood. It's written by J.K. Rowling. So it's also based on a cold case and it's also serial killer mystery. And that killer, he also had a very bad past related to his parents. So in most of the cases, if you see then most of the criminals, especially the serial killers and rapists and people like that, they have a very bad parenting experience. They have a very bad childhood, and they're not able to confront their parents or the people who are abusing them physically and mentally. So that bent up anger. mm, That just builds in a separate way, and that what to say that comes out in a very different way and
uh, due to that very bad childhood experience, they become a criminal. Then most the criminal and most of the innocent people are then harmed, and the people who are actually causing harm to them, they just I don't know why they never get the courage to attack them and take their vengeance on them. एक्चुअली Most सच में in क्योंकि most of the cases that this happens. इसमें इस फ़िल्म में ऐसा 2 तरीके दिखाए कि अगर डोमेस्टिक अब्यूज़ या कोई भी जैसा अब्यूज़ होता है वैसे फादर टू अ चाइल्ड वैसा कुछ जो 2 सिनेरियो हो सकते हैं कि आप एक गलत वाली राह पकड़ सकते हैं और एक अच्छी वाली राह पकड़ सकते हैं। लेकिन दोनों में वो कॉन्सिक्वेंसेस दोनों में वो जो पास्ट रहता है वो आपका पीछा नहीं छोड़ते यार। क्योंकि इसमें भी वो उसको हर चीज़ हर बात का रिग्रेट होता था जो 1970s में मर्डर्स करता था, उसको हर बात का रिग्रेट होता था और फिर जाके इसमें भी उसके मार्क्स के जो पुलिस ऑफिसर था, उसके मार्क्स के थ्रू उसको हर बार पता चल जाता कि हाँ, मेरे साथ भी प्रीवियसली ऐसा कुछ हुआ है। बट स्टिल And वी he says that everybody chooses to be a criminal. Someone becomes a policeman too. एग्ज़ैक्टली लेकिन एट द एंड आखिर में उनको पता चलता है कि नहीं यार वो पुलिस वाले होते हैं लेकिन कुछ अच्छा भी बिहेव करना रहता है वैसे और वो ही सेम चीज़ काफ़ी वो जो चीज़ थी वो काफ़ी अच्छे से दिखाई गई है। अशोक सिलवन के जो कैरेक्टर है डीएसपी प्रकाश जो आई थिंक उनकी कौन-सी फ़िल्म He's है so मुझे नहीं good. पता आई थिंक साई को बेटर पता होगा क्योंकि ही इज़ क्वाइट फ़ैमिलियर विथ द साउथ इंडियन सिनेमा स्पेस वैसे। सो Mm. इन्होंने ये 2 एक्टर्स हैं जो फर्स्ट एक वेटरन एक्टर है और ये दूसरे एक्टर है। उन्होंने कोई और अच्छी फ़िल्म्स ऐसे कुछ की हो जो आपको पता है शायद? Yes, bye. He's asking about Sarath Kumar and Ashok Selvan. Have you seen any other movies of them? Yes, I have seen many of their films. ओके, तो कोई अच्छी And ऐसा कुछ है वैसे पूछ रहा था मैं? bye. Can you आर देयर suggest some any movies? other great or good films by which stars these guys which is Ashok Selvan and Sarath Kumar? Yes, bye. There is a film called Ninnila Ninnila by Ashok Selvan. He is the protagonist of the film. It's a Okay. feel-good film. Uh, Okay. It's a really good film. Okay. And Sarath Kumar used to be a very big star in Tamil cinema, Yes, no? he is a star hero in Tamil Nadu, Okay. Okay. and Okay. now he is doing the roles of character artist. Okay. He's Hmm. almost 70. He doesn't look that old. ओह! ओके आई डिडन्ट मुझे ये नहीं पता था कि 70 साल के हैं वैसे। लेकिन He Mm. was an action hero. अच्छा, लेकिन शायद आपने पहले जैसे बोला था कि कैसे आपको एक फ़िल्म के जैसे वो लगी थी एक फ़िल्म जो आपने प्रीवियसली पहले देखी थी इट्स द बेस्टेस्ट क्राइम फ़िल्म फॉर यू इन इंडियन सिनेमा। Yes. सो वो उसका पैरेलल्स उसका कनेक्शंस कैसे लगा जैसे आप उस पे और ये कर सकते हैं, गौर कर सकते हैं उसमें? Yes, bye. There are certain parallels between these both films, and the screenplay is similar. There, similarly, we'll be having multiple suspects, and the killer has a troubled childhood, ओके, which makes him behave the way he does. And there are a lot of red herrings, and we suspect many people on the way. The suspects will be One of the suspects will be killed halfway through the film, हुँ, and it's remade in Hindi by Akshay Kumar Mm. recently. कौन-सी? I have watched the original one. And Sanket, you should Yeah. also watch it. Watch the It's original one of the one. greatest thrillers ever made. Yes, it's called Ratchasan, and it's from Tamil cinema. ओके, कौन-सी I guess लेकिन उसकी हिंदी रीमेक हुई थी? Hindi remake Katputli. The name is Katputli, and Akshay Kumar did it. I Released haven't last year, I watched guess.
I haven't watched the remake, but I can assure you it's going to be a shitty one. Please don't watch it. अच्छा, no problem. I don't know about the remake, but I watched the original in And it's 2018. too. It's brilliant. It's brilliant actually. Yes, yes. Okay. It's आप streaming on Geo Cinema. ओह! अच्छा, अरे वाह! बढ़िया है। लेकिन आप लोग को ऐसा कुछ लगा शताक्षी आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक सीन था जो व्हिच स्टूड आउट लाइक पूरे फ़िल्म में ऐसा कुछ अलग से स्टूड आउट किया, ऐसा कुछ आपको लगा? There are so many scenes. The best part of this movie is every detail in this film. It's not just a freaking show. It's not just a scene. It has meaning. Everything said, everything shown, it is somewhere connected to the other. That's the brilliance of the movie. My favorite scene would be there is a car scene between Selvan and Sarath Kumar where Selvan kind of what to say supports the antagonist by saying that by having such a background, by having such a bad upbringing, it's quite natural for people to turn violent, to turn into a criminal. Then Sarath says no. You can't just say it in such a simple way. There are many people who have been abused in their childhood, but still they are law-abiding citizens. So it's not that simple. I love that part because there is an undertone of sympathy throughout the movie for the antagonist, if you can feel that. And I won't say that I'm completely against it because me being a teacher, I've seen my students who are going through a bad childhood, who are experiencing bad parenting, and they behave in a certain way, which is not very normal. So I understand that. And in this, the things experienced by Sarath Babu, they were just unimaginable. ओके, I won't say that it was what to say very much normal to the way he reacted, but yeah, what could have been done by him? अ, हुँ, I have my आपको sympathies for Sharad Babu, but not for that monster. Oh my God! Probably he was impotent, and uh, that's also a loophole in the movie that that character and his background should have been shown a bit more. I felt that. His wife, she was not having a decent character, and the reason behind that probably was he was important and he was not a very attractive man. So all this summed up into he being violently killing other women. So you know हुँ, how is it. उसका So वो my पार्ट sympathies go with Sarath Babu, not with the actual villain in the movie. करेक्ट नहीं आई थिंक इतना ज़्यादा बिल्डअप कर दिया था जो 70s के किलर थे और उतना मतलब ज़्यादा बिल्डअप तो कि सेम फिर उसके जैसा ट्रीट किया था कि उनके साथ भी ऐसे करंटली हो रहा है और फिर जाके लाइक काफ़ी स्पीडीली जैसा हो गया था जैसे आप बताना चाह रहे लाइक अभी मुझे ऐसा एहसास हुआ उसका अभी ऐसा रियलाइज़ हुआ जैसे। सो येस काफ़ी ओके काफ़ी अच्छा टेक I था had उसका। just one question, हुँ, Sai. Um, Can you just explain this? They caught another criminal, and that man also confessed of his crimes. Was it due Yes, to yes, police brutality, or probably he was tortured in the cell? That's why yes. It he was just because of confessed. police involvement. There is a character whose ego was hurt by SP Uh, Loganathan, played by Sharath Kumar, uh, and so he'll that man say, was "We'll get tortured to confess. yes, yes, to close the case and send them away." ओके। Hey Sanket, how do you like Veena? वीना ओके मैं कैरेक्टर्स के नाम थोड़े भूल जाता हूँ। अरे वो लड़की प्यारी सी सुंदर जी सी. हाँ, एक्चुअली मैं उसके बारे में बात करने ही वाला था कि शुरुआत में
जैसे बोला था कि एक एक्सपर्ट आएगी, मेडिकल एक्सपर्ट या फोरेंसिक एक्सपर्ट आएगी। मुझे नहीं पता था, हम जैसे हर बार इमेजिन कर लेते हैं लाइक इट विल बी अ मैन वैसे, और फिर जाके शुरुआत में एक बंदे आते हैं, मैं बोला यार ये फिर से कुछ रोमांटिक जैसा एक टर्न ले रहा है, मुझे नहीं पसंद आएगा। लेकिन फिर हाँ, जाके पता चला कि कुछ ऐसा नहीं हुआ। इट्स जस्ट लाइक It was so good. It was so good. मतलब she यस, gelled into it. एग्जैक्टली लाइक जस्ट एक फ्रेंडशिप कलीग जैसे रह रहे थे उन दोनों, और शुरुआत से वही जैसा एस्टैब्लिश किया, और वो चीज़ काफ़ी I अच्छी लगी, हार्ट वार्मिंग what लगी थी। what's her name? हाँ. सॉरी, आप Nikila Vimal. ओके, हाँ। Oh, sorry. I'm very bad with names, but I loved her. अच्छा, सो ये लाइक इस फ़िल्म में जो थे, मैंने कभी उनको पहले लाइक ऐसे देखा नहीं है। जस्ट आपने जैसे मेंशन किया था, आर शरद कुमार थे, वो काफ़ी वेटरन एक्टर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने कभी उनको ज़्यादा स्क्रीन लाइक कोई कोई ऐसे मैंने भी. फ़िल्म्स में देखा नहीं है। मैं जस्ट देख रहा हूँ कि वो बारिशों में थे, और लाइक और ये पीएस1 में भी थे, रुद्रन करके एक फ़िल्म है उसमें। वैसे सो नॉट क्वाइट पॉपुलर जो जितने और स्टार्स हैं, जैसे कमल हाँ, हसन मतलब और पैन इंडिया स्टार नहीं है इसीलिए हाँ. हाँ, एग्ज़ैक्टली। उन्होंने सिर्फ़ तमिल या और साउथ इंडियन फ़िल्म्स की होगी, सो मेबी उसकी वज़ह से शायद से ये है। और मैं देख सकता हूँ कि वो एमएलए, फॉर्मर एमएलए भी थे ऑफ इन तमिलनाडु। तो विद लाइक वहाँ के विधानसभा में भी वो एक सांसद थे। सो ये चीज़ काफ़ी नई थी, इसलिए। और जैसे शताक्षी ने भी बोला कि लाइक वो एक पैन इंडिया स्टार नहीं है, प्रोबेबली उसकी वजह से बहुत नॉर्थ इंडियंस और वेस्ट इंडियंस लोग नहीं जानते हैं उनके लिए। लेकिन आई आई विश कि अभी इस फ़िल्म के थ्रू, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सोनी लिव काफ़ी अच्छे से मार्केट कर रहा है ये फ़िल्म को। होप सो बहुत सारे लोग ये फ़िल्म को देखें और ये फ़िल्म को पसंद करें भी। लाइक इट डिज़र्व्स ऑल द लव पीपल लाइक या फ्रॉम द पीपल, बिकॉज़ सच में. अब ऐसी फ़िल्म तमिल सिनेमा में बनने भी रह रहे हैं, क्योंकि तमिल सिनेमा इज़ आल्सो नोन फॉर इट्स लाइक वो सॉन्ग एंड डांस, और इसमें क्या सिर्फ़ एक गाना है जो आखिर में आता नहीं, है? Tamil movie is not always about song and dance. नॉट ऑलवेज़, It's बट a लाइक जितनी great, मैंने great film मणिरत्नम की industry. फ़िल्म हाँ, the देखी है, commercial movies maybe, but उनके जो offbeat movies होते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं. करेक्ट, नहीं, जितनी जितनी मैंने मणिरत्नम की फ़िल्म देखी है, इसमें लाइक सॉन्ग एंड डांस वगैरह रहते हैं, सो इसलिए मैंने सोचा कि लाइक इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर दैट, बट फिर जाके ऑब्वियसली वेट्रीमारन की फ़िल्म्स इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एक्सेप्शंस एज़ वेल। Big सो thumbs येस, up for Vetrimaran येस, sir. एब्सोल्युटली, आई लव दैट गाय एज़ अ डायरेक्टर, सो I आई will just pray that इसका कोई shitty Bollywood remake ना कोई बना दे, please. अगर बनाना है अच्छा से बना. भाई मतलब इतना गोरली, इतना डार्कली नहीं कर सकते, लाइक इतना नहीं, हाँ, उसमें 5-6 सॉन्ग डांस ये सब ऐड कर देंगे, अक्षय कुमार तो रहेगा ही. सो इसलिए सो आई जस्ट लाइक दिस फिल्म, आई लव दिस फिल्म, मतलब एट द It एंड was वैसे so मैं good. बोलना चाहूँगा। She's, सही and आपको। please talk about that final thing after the case was solved, that little boy and his parents, the problems he was having with his parents, and how Selvin solved it. Oh, that was so good. Loved it. एग्जैक्टली लाइक उनको पता चलता ना कि ये चीज़ उनके सामने सब देख रहा हो, और वैसे और फिर जाके क्या हो रहा है यार, कि अगर ऐसा कुछ होता है 2 लोग के साथ, ना सिर्फ सॉरी 3 लोग के साथ, जो 2 किलर्स हैं और उनके जो कलीग है, उनके साथ भी ऐसा हुआ है। और हम लाइक जो पुलिसमैन है वो तो हम अज़्यूम कर रहे हैं, जस्ट वो पीछे के बैक मार्क्स देख के, वो तो सिर्फ अज़्यूम कर हाँ, रहे हैं। वैसे कुछ भी वो हो देख के सकता है. कितना कितना उनको वो लग रहा होगा, और सच में जस्ट उन्होंने वहाँ पे जाके अंदर बोला कि भाई ख्याल रखो अपना इसका, और फिर जाके एक अच्छा हैप्पी एंडिंग, इट डिज़र्व्ड काइंड ऑफ अ हैप्पी एंडिंग वैसे यहाँ पे I था। just love the fact how Selvin comes from a very happy family. In that one frame, all his family members are there. Eco हो रहा है मेरा Yes, आवाज. yes. नहीं, नहीं, And नहीं। uh, and when it comes to Sarat Kumar, we don't know a thing about his background, about his family, about the kind of thing he comes from. We don't know anything. So that was a stark difference between the two protagonists.
one coming from a very happy family kind of thing, and one probably without a family, or तो probably with abusive parents. We don't Abusive know. father. Yeah, father. A mother यस can be एक abusive too. Yes, आपके yes. लिए एक कमेंट आया है साई शंकर भाई, आप भी कुछ बोलो। ज़रूर आप भी कुछ बोलो कि कैसा लगा आपको Okay. ये, आप आपको कैसा लगा ये एंड, स्पेशली जैसे अभी एंड की बात कर रहे हैं, क्लाइमैक्स। Sorry, Sai. नो, नो। I'm being so talkative. I'm not allowing No, anyone else to no, no, speak. no. यस, आप I guess he's friend of mine. ओके, बट आप भी कुछ बोलो कि अबाउट द क्लाइमैक्स आपको कैसा लगा? जस्ट योर थॉट्स। Yes, it sums up the entire theme of the film, the core theme of the film, ओके। about how if domestic abuse is controlled, better citizens are formed, and the mindset of children is not affected. बहुत बहुत एक्चुअली बराबर Children बोला आपने। are too sensitive and they need to be handled with care and compassion, but when they are abused, it may be a permanent scar on their psyche, हम्म, Okay. जैसे हमें यहाँ पे which देखते हैं may कि either turn them into cowards, completely inferior beings, or into some monsters like they showed in the film. ओके, डेफिनेटली। सो सो थैंक यू गाइस, बहुत अच्छा लगा इस फिल्म पे बात करने के लिए। लाइक मैं हम ये फ़िल्म के बारे में साई ने ही पहले मेंशन किया था। यूजुअली अनय मुझे मेंशन करता है कि कुछ न नया तमिल फ़िल्म आया है तो ये देखना चाहिए। लाइक अब मैं साई करती हूँ तो तू कभी देखता नहीं है, देखता भी है तो बाद नहीं, में नहीं, गाली नहीं, देता है कि नहीं। बहुत घटिया थी, तूने क्यों मेंशन की? हाँ, नहीं, मुझे पेरूमल मुझे अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन ठीक है, मैं ज़रूर मैं और लाइक साउथ इंडियन फ़िल्म्स ज़रूर देखूँगा। लेकिन टिल देन थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर जॉइनिंग मी। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए और इस फ़िल्म के बारे में बात किया। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, डेफिनिटली थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड नाइट। Thank Thank you, you, bye. Sanket, Thank for you for having inviting. us. Yes, I think yes.